होता है agree on 5 to 7 performance goals in what core performance areas, job specific performance areas up to 50%. ये वेटेज आगे पीछे हो सकती है, कंपनी का पास डिस्क्रिप्शन होता है, इस वेटेज को 80-20 भी कर सकते हैं, what and how part. लेकिन जब रोल बहुत ही न्यू होता है, फ्रेश ग्रेड्स वाला रोल होता है, जिसको ऑफिसर एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं आप, ये वाला अगर रोल होगा तो मोस्टली व्हाट का जो पार्ट होता है वो 50% से ज्यादा होता है और हाउ पार्ट थोड़ा कम होता है. और अगर आप बात करते हैं लीडरशिप लेवल पे तो व्हाट पार्ट का वेटेज थोड़ा कम होता है, हाउ पार्ट का ज्यादा हो रहा होता है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज डिस्क्रिप्शन एज वेल. हाउ पार्ट के अंदर कोर बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, जॉब स्पेसिफिक बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज 50% और स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स उसके अंदर होते हैं. Now we're going to talk about the KPIs versus goal. Very confusing for so many people के KPIs and goal एक जैसा होता है. Both are different things, of course. Similarity बहुत ज़्यादा है इसके अंदर. Now we talk about KPI, indicator for fulfillment of a job responsibilities. Example, facilitate recruitment activities. Measurement KPI equals to time to fill opening 8 to 9 average equal to 6 months. Right? The KPI basically it's a measurement criteria जो आपने गोल सेट किया है, उस गोल की मेजरमेंट हम कैसे कर रहे होते हैं. बेसिकली गोल क्या है, 9 to 10 bring average time to fill down from 6 months to 4 months. KPI आपकी क्या है, टोटल 6 months के अंदर आपको टाइम टू फिल ओपनिंग जो जॉब्स है वो पूरी करनी है. का गोल क्या होता है कि 6 महीने में नहीं बल्कि मुझे 4 months वो काम पूरा करना है. This is called difference between KPI goals. Step number 1, identify what you want to achieve, visualize what will be different afterwards. Work more closely with line managers. Writing smart goals in the step number 2, make it specific. Ask yourself, what do you really need to do? Work more closely with the line managers. Question, why do you want to work more closely with the line manager? Answer, so that the number of mishires is reduced. हमें लाइन मैनेजर के साथ इसके मिलके काम करना चाहिए ताकि जो रॉन्ग हायरिंग है, मिस हायरिंग है, वो कम हो सके. अगर हम अपनी मर्जी से हायरिंग करेंगे और लाइन मैनेजर के मुताबिक नहीं होगा, it could be a problematic in the future as well. Question, why do need to reduce number of mishires? So that average turnover at the plant is reduced from 15% not confirmed or leave within 12 months to 10%. अगर मिस हायर होंगे तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाएगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ेगी और कंपनी की रेपुटेशन भी साबोटाज होगी. The goal becomes to reduce the average annual turnover from 15 to 10%. So this is basically a goal and which is very specific and measurable as well. Writing smart goals, step number 3, agree some actions, what specific actions need to be taken to achieve the goal. Reduce the average annual turnover from 15% to 10% by December 31st. इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? Analyze turnover data for last 2 years, department function wise, position wise. Conduct survey of identified high turnover department functions and position and purpose of interventions based on findings. Implement approved interventions. Analyze end of year turnover data and present findings. Writing smart goals, step number 4. What are the measures, milestone for the goal help you to test your progress towards its completion? Reduce the average annual turnover from 15% to 10% by December 31st. इसका measure कैसे होगा? Analyze turnover data for the last 2 years, department function wise and position wise. Initial analysis report by July 1st. तो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं, जो हम इसकी मेजरमेंट करेंगे, हमें वो रिपोर्ट कब तक चाहिए? दिसंबर 31st तक. उसकी इनिशियल एनालिसिस हमने कब की? बाय 1st of July. Conduct survey of identify high turnover departments and position and purpose intervention based on findings and survey results interventions proposal by 15 August. Implement approved interventions project work plan by September 1st, complete by November 30th. Analyze end of year turnover data and present findings. Final analysis report by December 15th. Smart goals में basically we talk about specific, think micro, not a macro. Max performance expectations very clear. आप थोड़ा सा सोचो, इतना बड़ा भी नहीं सोचो,
और अपनी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल क्लियर कर दो कि हमें परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इंडिविजुअल से, डिपार्टमेंट से और बाकी लोगों से. Now we talk about measurable. You should be able to monitor and evaluate progress in terms of objectives. मेजरेबल जब बात की जाती है, जो आपने स्पेसिफिकली सोचा है, काम किया है, आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उसकी उसकी क्राइटेरिया होना चाहिए. हम कैसे मेजर करेंगे? नंबर ऑफ डेज में मेजर करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स में मेजर करेंगे, कोई ना कोई मेजरेबल टूल आप उसके साथ जरूर अलाइन करेंगे. नाउ वी टॉक अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मेजर के अंदर हम कैसे चीजों को मेजर करते हैं. नंबर वन, क्वालिटी. हाउ वेल द रिजल्ट इज प्रोड्यूस्ड, परफॉर्म्ड. एरर्स इन अपीयरेंस, कितनी गलतियां हुई, कैसे वो चीज दिखती है, उसके लुक एंड फील कैसा है. नाउ वी टॉक अबाउट क्वांटिटी. हाउ मच मेनी ऑफ द रिजल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड और परफॉर्म्ड. कितना रिजल्ट परफॉर्म किया, कितना कहा गया था, कितना वॉल्यूम कहा गया था, रिजल्ट नंबर्स में कैसे मेजर होगा, क्या चीज आपने प्रोड्यूस की है और क्या चीज आपने परफॉर्म की है. कभी कभी मेजरमेंट कॉस्ट का भी होता है. दिस इज कॉल्ड व्हाट, at what expense the result is produced in performance. किस कॉस्ट पे आपने जो रिजल्ट आपसे एक्सपेक्ट किया गया था वो किस कॉस्ट पे आपने प्रोड्यूस किया. फॉर एग्जाम्पल अगर कॉस्ट पर हायर हमारी होनी चाहिए 1 लाख रुपए, हायरिंग तो आपने कर ली, लेकिन आपकी कॉस्ट 1,20,000 रुपए थी, तो इसका मतलब है यू ओवर यूटिलाइज द बजट्स. आपको कॉस्ट पर हायर 1 लाख रुपए थी, बट यू यूटिलाइज 75,000 रुपीज. इट मीन यू गेव the savings of 25,000 rupees to the company as well. The fourth element is outclass, and there's no substitute to this element called timeliness. When is the result to be produced, performed? साल की परफॉर्मेंस ये थी कि आपको 100 हायरिंग करनी है और साल के अंदर ही करनी है. यू हायर्ड 70 पीपल, बट 30 पीपल यू हायर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी. भले आपने वर्किंग दिसंबर में की हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने टारगेट जो अचीव किया वो नेक्स्ट ईयर अचीव किया. विद इन द ईयर आपने टारगेट अचीव नहीं किया. तो टाइमलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now we talk about third objective, that is called attainable. It's a frustrating to have an objective that you don't have control over, that can't be achieved in the reasonable amount of time. Consider obstacles and resources needed. कभी कभी ये फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है क्योंकि आपके पास उस चीज का कंट्रोल नहीं होता, और कभी कभी आप इसलिए अचीव नहीं कर सकते, आपके पास उतना टाइम नहीं होता अचीव करने के लिए, और कभी कभी रिसोर्सेज बहुत कम और मुश्किलातें बहुत ज्यादा होती हैं. बट अटेनेबल मीन्स हाउ टू अचीव दैट टारगेट एज वेल. Now we talk about attainable. Get out of the comfortable zone. The last zone, that is called panic. The middle zone is the comfort zone. Stretch. आपके पास सबसे पहले क्या होगा, कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा. यू हैव टू स्ट्रेच योरसेल्फ. आफ्टर स्ट्रेचिंग यू विल बी इन द पैनिक. यार कैसे होगा, नहीं हो सकता, मुश्किल है, प्रॉब्लमेटिक है. देन यू अचीव दैट टारगेट अमेजिंगली. सो अटेनेबल के लिए यू नीड टू लीव the comfort zone. Now we talk about relevant. The objective should relate directly to डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. जो भी आप काम कर रहे हैं आपके वो कंपनी ऑब्जेक्टिव्स और डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव से अलाइन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल इफ यू आर द एचआरबीपी फॉर द कमर्शियल टीम, इफ यू हायरिंग सेल्स प्रोफेशनल्स, यू मस्ट नो किस बिजनेस के लिए हायर हो रहा है, किस प्रोडक्ट के लिए हायर हो रहा है, किस किस सेगमेंट के लिए हायर हो रहा है, किस मार्केट के लिए वो हायर हो रहा है. सो यू नीड टू क्रिएट दैट रेलेवेंस विद द बिजनेस, डिपार्टमेंट एंड योर टारगेट्स एज वेल. Now we talk about the last thing, the timed. You should be able to track the progress against specified time frames. अगर आपको बंदा हायर करना है, आपके पास 30, 60, 90 डेज का टाइम है, you need to measure. हायरिंग तो होगी, हायरिंग भी कर लेंगे. Either it is within the time frame or not. If the hiring is not within the time frame, it means this is a big problem for you and for the organization as well. Now we talk about setting behavioral competency goals. How the competency is an underlying characteristic of an individual that causes or predicts effective and a superior performance in job situation. David C. Mickland ने कहा ये कॉम्पिटेंसी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपीरियर या इंफीरियर कौन है उस जॉब जॉब को लेकर या जिस सिचुएशन में जॉब परफॉर्म की जा रही है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सेटिंग बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी एज वेल. Top performers do things differently. Top performers do things differently. शिव खेरा का एक कॉल यहाँ पर मैं आपसे शेयर करूंगा. Winners don't do different things. They do
things differently. आप वर्टिकल साइड देखेंगे इट्स लो हाई बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी. आप हॉरिजेंटली आप देखेंगे नेवर ऑलवेज फ्रीक्वेंसी. इट मींस वी टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी. एवरेज परफॉर्मर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर एंड आपका हाई परफॉर्मर. तो इसी चार्ट के हिसाब से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, राइट? Then we move to our types of competencies, the core competencies, behaviors critical to individual and group performance to obtain a company's strategic objectives. Job specific competencies, behaviors associated with fulfilling responsibilities of a specific job role and task. जो आपका जॉब रोल है उसके साथ जो कॉम्पिटेंसीज अलाइंड है उसे कहा जाता है जॉब स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ कस्टमर सर्विसेज पर्सनल, तो मेरे लिए कम्युनिकेशन रिलेशनशिप कॉम्पिटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होगी. इफ आई एम अ फाइनेंस पर्सनल, तो मेरे लिए न्यूमेरेसी एंड एनालिटिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी. सो इट कीप चेंजिंग फ्रॉम रोल टू रोल एंड जॉब टू जॉब, बट कोर कॉम्पिटेंसीज will remain the same for customer services and for the finance personnel as well. Identify job specific competencies, bring average time to fill vacancy from 6 months to 4 months. Last year, due to lack of an updated resume database, a suitable pool of applicants couldn't be readily sourced. Resumes were unorganized, outdated, and scattered through the HR department. Which is specific, which job specific competency? Three key elements to focus when developing performance: goals, actions, and measures. A desired output or result, it should be a single sentence that contains an action, verb, and clear end results. In actions, series of tasks and activities that need to be completed during the performance cycle that will progress you towards achieving your performance objective. Your actions act as a progress checklist for your reference during the performance cycle. While we're discussing the measure, KPI define precisely what is to be achieved. They should be stretching but available and should reflect the expectations of the role. Measures may be a qualitative and a quantitative, and objectives may have several different targets to be met. Now we talk about KPI versus goals. KPI versus goals, we already talked about. Indicator fulfillment of job responsibilities, facilitate recruitment activities, measure KPI time to fill opening 9 to 10, average equals to 6 months. Goal 10 to 11, bring average time to fill down 6 months to 4 months. Now we're going to talk about reduced turnaround time of the business units for budgets information from 4 days to 2 days by January 15, 2010. Action 1. Review and updated progress requesting department budget information. Action 2. Communicate updated budget request process to all departments and finance staff. Action 3. Review and update budget systems procedures. Action 4. Monitor budget request from departments and reinforce process as required. What would be the KPI? 80% of all budget information requests are met within 2 working days. Using action verbs while you are writing down the KPIs and goals. Start with an action or accomplishment verb. Activate, address, adjust, apply, arrange, assemble, assess, balance, break down, build, calculate, categorize, change, charge, check, choose, cite, classify, clean, compare, and so many other words are mentioned in our screen as well. Now we talk about weighing, means weighting performance goals. Performance goals are weighted in order to reflect the relative value of one goal to another. 10%, 20%, 30%. It means this shares the measurement. Sometimes one object is more important than needs to be focused, so the weighting reflects that. They assist you where to direct your time and attention.
As a rule of thumb, goals should be weighted according to the amount of time and efforts required to produce outcome as well as the impact or importance of the outcome. Final weightings need to be agreed between line manager and direct reports. Weighting. Um, Performance goals. For example, if you spend 2 days per week managing a specific project, the maximum weighting you should apply to objectives relating to this project is 30%. It is important to weightings are not unfairly applied to unfairly distort performance rating outcomes. Weighing a performance objective as 30% when 5% of your time is spent on that specific task. Types of performance goals. Three types of performance goals, each with a different purpose. Maintenance, maintaining performance in a critical responsibility areas which is currently at acceptable or more than acceptable level. मेंटेनेंस उसे कहा जाता है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस एरिया में आपको दी गई है किस लेवल पे वो मेंटेनेंस आप एक्सेप्टेबल है किस लेवल पे वो अनएक्सेप्टेबल है या ज्यादा लेवल पे वो एक्सेप्टेबल है problem solving or improvement solving problems improving things that are impacting on the performance जब लोग परफॉर्म कर रहे हो उनकी परफॉर्मेंस एक्टिविटीज के साथ साथ जो चीजें प्रॉब्लमेटिक है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना इम्प्रोवाइज करना इज अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस गोल थर्ड वन इनोवेशन डिवाइसिंग न्यू एंड बेटर वेज डूइंग थिंग्स आपको नई चीजें नए तरीके से नए अंदाज से करके दिखाना इट इम्प्रोवाइज टू अचीव योर गोल्स एज वेल formulating performance goals. Spend time thinking about your business area. What are its approved objectives for next year? What are the challenges it faces? What are the team's plans? Refer to your job description, the business unit or department objectives. Spend time thinking about yourself. What are your strengths? What feedback have you been provided with previously? What are you doing that could be improved or what are you not doing? What do you want to achieve in next 12 months? Think about how your goals align to those of business units of departments. Are your goals providing you with a sufficient stretch and development? In a nutshell, जब आप फॉर्मुलेट कर रहे हो अपने बिजनेस परफॉर्मेंस एंड गोल्स को यू मस्ट नीड टू नो बिजनेस एरिया क्या है अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को रेफर करें व्हाट आर द टास्क असाइन टू मी व्हाट टास्क आई कुड हैव डन या कुड बी डूइंग बेटर इन द फ्यूचर अपने आप से पूछें कि मैं जब जो काम सही कर रहा हूं उसका फीडबैक कौन देगा मेरी स्ट्रेंथ क्या है मैं किससे फीडबैक मांगू मुझे क्या प्रीवियसली फीडबैक दिया गया था आने वाले 12 महीनों में मुझे क्या करना है मेरे अपने तमाम गोल्स को अपने बिजनेस यूनिट के साथ अलाइन करना चाहिए